Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second class. How are you all, beta? I hope everybody will be fine, inshallah, with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, as you know that yesterday we started our chapter number 4, the end of term. This essay has been written by David H. and in this essay he explained, actually he not only explained but he also narrates that how did he feel about his school period, school time, and what kind of feelings he had when he was a student. Okay beta, so let's start our today's lecture. And do you remember that how many paragraphs did we read yesterday? We read up to Friday morning was positively rose colored. Okay, so let's start from the next. The last period, as each of our lessons was called on a Friday, whatever the subject had its special happy flavor of the end of the week, and one walked home from school on a Friday आफ्टरनून. ओके बेटा, क्या था इसमें कि द लास्ट पीरियड मीन कि जो आपका एज ईच ऑफ आवर लेसन वॉज कॉल्ड, कि लेसन को बेटा क्या कहते थे? पीरियड कहते थे. ठीक है, सो ही इज सेइंग दैट एज द लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ आवर लेसन वॉज कॉल्ड ऑन फ्राइडे. बेटा फ्राइडे को जो हमारा पीरियड होता था कि फ्राइडे वॉज द लास्ट वर्किंग डे. ओके, सो जुम्मे के रोज़ जो आखिरी पीरियड होता था उसमें क्या होता था, चाहे किसी भी मजमून का होता, वट एवर द सब्जेक्ट हैड स्पेशल हैप्पी फ्लेवर. ओके बेटा, हैप्पी फ्लेवर मीन इट हैड अ टेस्ट, इट हैज़ अ टैंग, इट हैज़ अ रेलिश. ठीक है, फ्लेवर मीन सो इट हैड स्पेशल हैप्पी फ्लेवर फॉर द एंड ऑफ द वीक बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द वीक. And one walked home from school on a Friday afternoon. However much homework had been assigned for the Monday with the tread of an escaped prisoner. Okay बेटा, so क्या उनकी कंडीशन होती थी? That they were like escaped prisoners. Escaped mean run away. ठीक है, और prisoner mean captive, जैसे कैदी होते हैं. ठीक है, सो उनकी क्या कंडीशन होती थी? द स्टूडेंट्स एंड इवन द ऑथर डेविड डेचिस, ही फेल्ट दैट ही वॉज एन एस्केप्ड प्रिजनर. ठीक है, जो कि जिसको जेल से फरार हासिल हुआ है, जिसको जेल से निजात मिल गई है. ओके, सो फ्राइडे नाइट विथ 2 solid days बिफोर स्कूल अगैन was the best night of the week. अब फ्राइडे नाइट बेटा आपको पता है कि for ourselves when we have only one holiday, that is Sunday, and the Saturday night it takes a lot of happiness for us because the next day is off day, so we feel happiness. In the same way the author, he had 2 weekends, he had 2 holidays like Saturday and Sunday, and Friday night with 2 solid days before school again was the best night of the week. Okay, Saturday night with still a whole day between it and Monday was pleasant in a quite different way. Sunday night was full of the threat of Monday morning. Yes, very right beta. The same way the students, they feel, he is actually describing the feelings of the not only himself but all the students. ठीक है बेटा, तो कैसे वो कर रहे हैं कि the Sunday night, of course when we keep this thing in the mind that we have to go tomorrow to school or on our job and to do some thing, that we feel a type of horror. ठीक है बेटा, तो हमें इस तरह से एक हॉरर की फीलिंग हमारे माइंड में आ जाती है. Okay, so beta next paragraph. Sometime there were unexpected respites. ठीक है बेटा, respites, what are respites? Interval breaks. ठीक है बेटा, कि sometimes ऐसा होता है ना कि when we are going to school and there are unexpected holiday, ये इस तरह से होता है, there are strikes and there are matches, and due to that matches and due to that strike the school is closed for 2 or 3 hours before. So this was happening with the
author David H. also. So sometimes there were unexpected respites, half holiday, or to let us attend football match which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Sunday, or the sudden dismissal of school an hour or two before the usual time because of the some unexpected crisis. Okay बेटा, वो क्या कह रहे हैं कि sometimes they were unexpected respites, ठीक है, वक्फे होते थे, a half holiday to let us attend, किस लिए बेटा होता था हाफ हॉलीडे के, वो फुटबॉल का मैच दिखाने के लिए ले जाते थे, हाफ डे उनकी जो ऑफ हो जाता था, मैच विथ सम ऑफ अनफोर्सिन, बेटा अनफोर्सिन मीन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से जो कि सर्कमस्टेंस हैड कॉज टू बी कैंसल्ड, जो कि बेटा उनका जो फुटबॉल मैच था वो किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो चुका होता था। द प्रीसीडिंग सैटरडे, प्रीसीडिंग मीन प्रीवियस, ठीक है, जो प्रीवियस सैटरडे को उनका मैच होना होता था तो वो किसी वजह से ऑफ उसको नहीं हो पाता था। और द सडन डिसमिसल, ओके बेटा, डिसमिसल मीन डिस्चार्ज, आज़ादी या छुटकारा, ओके, और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन आवर और टू बिफोर, ऐसे होते हैं ना बेटा कि एक, मैंने पहले आपको बताया दैट यू गेट 2 or 3 hours holiday from the school, okay, break from the school and hour 2 before the usual time, बेटा कैसी we feel a sudden happiness, ठीक है ना, because of some unexpected crisis of celebration, या तो crisis, if there are some crises, mean to say there are catastrophe or calamity, so we feel fear and you can say anxiety, but if there is a celebration type thing then we feel a lot of happiness. So it was the same with the case of David H.'s, but these were few and far between, few and far better, seldom, लेकिन ऐसा of course it is not the routine of any you can say institute, ठीक है, academic institute, that they give a lot of weekends and they give a lot of break hours, off hours in their daily routine. So it happens far and few and far between, कभी कभार ऐसे हो जाता था, seldom ऐसा होता था, but not daily basis, ठीक है. So once a term we had the annual mid term holiday, a Monday off, okay बेटा, अब क्या होता था कि once a term we had, कि जब हमारी जो है वो टर्म स्टार्ट हो जाती, ठीक है, मीन टू से कि टर्म मीन एनुअल जो आपका दौरानिया है, ठीक है, जब वो स्टार्ट हो जाता, वंस ए टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, तो एनुअल मिड टर्म बेटा कौन सी होती है, आफ्टर 6 months, सो एनुअल मिड टर्म हॉलीडे अ मंडे ऑफ, तो फिर बेटा उसमें क्या होता था कि जो है वो मंडे ऑफ हो जाता था, ठीक है, ओके, तो उस मंडे ऑफ हो जाता, उस पर क्या होता, मंडे ऑफ हॉलीडे, अ मंडे ऑफ विच मेड अ luxuriously लॉन्ग वीकेंड, ठीक है, वंस ए टर्म हैज द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे अ मंडे ऑफ विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड, ठीक है. अब जो लग्जूरियसली मीन बेटा कि लेविशली, ठीक है, स्प्लेंडिडली, बहुत ही ज़्यादा, ऑफ कोर्स जब आपको अनएक्सपेक्टेड बेटा हॉलीडे मिलती है, सो यू फील अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है. सो इट वाज सेम विद द केस ऑफ ऑथर दैट अ मंडे ऑफ, अब आफ्टर 6 months देयर वाज अ मंडे ऑफ. सो नाउ कैलकुलेट द ऑफ डेज for the writer that he had Saturday, Sunday and Monday. It's mean a long weekend, ठीक है बेटा. So it was, as the author is saying, that a Monday off which made a luxuriously long weekend, but it seemed to go just as fast as ordinary weekend, ठीक है बेटा. Of course we have if we have 2, 3, 4 weeks 4 days off, and then we have to go to school or college or university again, so we feel that these holiday, these 4 days have spent so fast and we didn't enjoy, we didn't take rest, and we didn't do a lot of things in this time. So it was the case with the author that just as the ordinary weekend, and occasionally in winter if there had been a continuous hard frost for some days. Okay बेटा, अगर कहता है कि frost होती, mean to say कि if जो है वो वहाँ पे जैसे शदीद सर्दी होती बेटा, frost mean ice या chill, when there are a lot of ice, so what will be happen with the school boys, that they will given a full day, ठीक है,
we would get a whole day skating holiday. So they get a skating holiday beta. So what a type of enjoyment they had in their you can say educational terms. ठीक है, तो कितने बेटा enjoy करते हैं. और of course the all the students if they study at the same time they enjoy a lot. So beta this educational period, this educational time is quite enjoyable, and you don't feel it a burden for you, because it is your life changing time. Okay. सो दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स. ओके बेटा, अब क्या थी कि ये ब्लेस्ड ब्रेक्स थी. डेज वी वुड गेट अ होल डे. ओके, दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन बट नॉट ऑफ कोर्स comparable to the holidays we got at Christmas and at Easter 3 weeks each in my earlier school days. ओके बेटा, कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स दीज वर ब्लेस्ड हॉलीडेज. अच्छा था, मज़ा आता था. ठीक है, आफ्टर व्हेन वी गेट 2 or 3 holidays collectively. But beta, he's saying that these holidays can't be compared with the holidays that we got in Easter. Okay, and what a time of summer holidays. The summer holidays cannot be compared with any holidays. Of course beta, as you know that the summer holidays, they had a long period. Okay, like 2 or 3, 2.5 months, or you can say 2 months. So it is a lot. There are many days, okay, to be enjoyed. So he's saying that comparable to the holidays we got at Christmas and get at Easter. अब Easter और Christmas बेटा उनके जो त्यौहार हैं दो, ठीक है, because they are Christians, so these are their holidays. As a Muslim we have our अदर हॉलीडेज़. ठीक है बेटा. सो इज सेइंग दैट जैसे हमारे पास ईद की हैं, ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर एंड मुहर्रम टाइप हॉलीडेज़. ठीक है बेटा. सो ही इज सेइंग दैट 3 weeks ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज. तो कहते हैं व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, सो इट वाज दैट 3 weeks ईच. कि आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती? 3 हफ्तों की. ठीक है ना, 3 हफ्तों की छुट्टियाँ मिलती थी और फॉर ईस्टर एंड क्रिसमस. लेटर ट्रेजिकली, ओके बेटा, ट्रेजिकली मीन कि बदकिस्मती से, ठीक है, क्या हुआ कि उनकी जो छुट्टियाँ थी बेटा, इट गेटिंग रिड्यूस्ड टू अ फोर्टनाइट मीन 15 days. ठीक है. सो इट गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 weeks to 15 days, मीन टू से 2 weeks. एंड देन इफ़ माई रिकलेक्शन, ओके बेटा, रिकलेक्शन मीन मेमरी, कि अगर कहता कि मेरी इफ़ आई एम नॉट you can say that if my recollection, if my memory is quite right, or if I'm not lost my memory, so is not misleading me to a mere 10 days. So it was reduced to 10 days beta. 10 days में वो चली गई थी. But the holidays were the summer holidays. Wow, the 2 months vacation we got in the summer time, and it was these months towards which the whole year moved. और बेटा क्या था कि of course the students, they wait for the summer holidays, because this is the longest period of all the holidays that we get in a year. ठीक है बेटा. So as a poet, author is saying that these summer holidays, it was these months towards which the whole year moved. कि इनकी तरफ ऐसे ही summer holidays होती थी कि इन्हीं की तरफ जो है वो हम सब का ध्यान रहता था. Okay बेटा, I hope all of you have well understood the lesson. And inshallah we'll start our next paragraphs tomorrow. Till then beta, fi amanillah, may Allah protect you from all dangers. And till then, thank you so much for listening me and following my advice. Allah Hafiz.